Good evening. You're watching No Spin. I'm Nidhi Razdan. Well, less than 36 hours now to go before counting of votes and a sensational press conference by Akhilesh Yadav, the head of the Samajwadi Party, who is the BJP's principal opponent in Uttar Pradesh. Mr. Akhilesh Yadav alleged that his party workers saw EVMs being taken out of a counting centre in Varanasi. They released footage as well because SP workers took videos of these EVMs apparently being taken out of this counting centre. They intercepted it and shouted slogans and held protests. Now the DM, the district magistrate, has responded to these allegations, saying that the EVMs were being used for training, and that is why that they were being taken out, that they were meant for the last-minute training of government officials, and that EVMs used inside the counting rooms are in a strong room guarded by the CRPF, which also has CCTVs. Akhilesh Yadav making very strong allegations there on the eve of the elections, claiming that there was an attempt, in a sense, to steal the election. He also claimed that a top bureaucrat in the Yogi Adityanath government was calling up different district magistrates and telling them that in areas where the BJP appears to be losing, counting should in fact be slowed down. Let's listen in to what he said. दो गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं? अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी? स्पष्ट कर लें, जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रांग रूम है, जो पोल्ड ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रांग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी, जिनमें पोलिंग हुई है, उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई, आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे। उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं। प्रशिक्षण के नंबर हैं, जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे, वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। Well, quite a story there breaking on the eve of counting. Just focusing on Uttar Pradesh for a moment, just to remind you what the exit polls said and why this is such a huge contest. All the exit polls that we broadcast last night from across various news channels predicted a BJP win, though the margin, we have to say, is quite wide. It ranges anywhere from 211 seats at the lowest to 326 at the other end of the spectrum. So even a small swing in this could actually change things at the end of the day. So we'll actually have to wait and see what happens on counting day. And speaking of swings, just to take a closer look at why the UP election has turned out the way that it has. Remember, the BJP had a huge victory last time and it had nearly 40% of the vote share. Now, polls have forecast that even though the BJP may lose 100 seats, down to 225 or so of the 403 in UP, it would still win with a clear majority. In 2017 also, the BJP's average margin of victory in seats across the state was, at 10%. So that just gives you a sense of just how big their victory was. As far as UP overall is concerned, there's always been volatility there, at least in recent elections. If you look at the last 25 years, there have been 5 elections in Uttar Pradesh and there have been 5 changes in government as well. So if the BJP actually breaks this trend this time and Yogi Adityanath is re-elected, then that would actually be creating history of sorts. Also, in terms of swing, what is the swing that is needed for the BJP to lose its majority? Well, that would be a minus 7.5%. So if 7.5% of the vote swings away from the BJP, that is when it would actually lose its majority in the state.
Despite this enormous swing, though, that is needed for the BJP, there is concern within the BJP that swings of this magnitude are not uncommon in UP, because if you look at how the BJP won the last election, they had a huge swing in favor, which was at 26.3%. So -7 might sound very big, but actually Uttar Pradesh has seen these massive swings before. So the question is, could it possibly see such a swing again? Lots to talk about tonight, not just on what's happening in UP, but also the national impact of these elections, because remember, the repercussions will be felt beyond these states that have gone to the polls. Let me go straight across to our panelists this evening, and first, get a comment from IP Singh of the Samajwadi Party. IP Singh, we heard the DM there of Varanasi saying that these EVMs that your party, that Akhilesh Yadav said were being taken out of counting centers, these were being used for training. That ये election से connected नहीं है. Do you buy this? क्या आप मानते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं? IP सिंह जी, शायद आपने म्यूट पे रखा है, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए. जूम का जमाना है. जी निधि जी, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है कि अगर ईवीएम चाहे वो खाली हो, किसी राज्य से आई हो, अगर उसका मूवमेंट इलेक्शन के ड्यूरिंग होता है तो उस ईवीएम को इन्फॉर्म करना पड़ता है. मेरे बहुत से डीएम से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री को हमने वहां लगाया है. हम जब भी जाते हैं, यहां तक कि डीएम और कप्तान भी जब जाते हैं तो हम वहां अपोजिशन को और बीजेपी को भी सूचित करते. दूसरा ये कि सोनभद्र में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, बरेली में मिली है. आखिर ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत ही सेंसिटिव है, और चुनाव के दौरान डीएम से हम उम्मीद नहीं करते. डीएम तो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत से एलिगेशन, सीरियस एलिगेशन लगे हैं. हम तो चुनाव आयोग से मांग कर रहे थे कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है सीएम के, उनको हटाया जाए. जो अपर मुख्य सचिव है, उनको गृह है, उनको अवनीश अवस्थी को हटाया जाए. हमारे तमाम डीएम एसपी को हमने हटाने की बात करी. और निधि जी, सबसे सरप्राइज बात ये थी कि बीजेपी ने उसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया है. और ये सरकार और उनके अधिकारी, चुनाव आयोग, सबकी मिली भगत है. और बिहार में आपने देखा कि बिहार में जो ईवीएम की काउंटिंग 2 बजे तक पूरी हो जाती थी और रात के 2 बजे तक चली. तो इस तरह के ट्रेन से इस तरह की जानकारी ब्यूरोक्रेसी से आ रही है, और हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से. तो आप बिल्कुल नहीं मानते. आई जस्ट वांट टू गेट अ कमेंट फ्रॉम ऑल द पॉलिटिशियंस ऑन दिस पैनल, बिकॉज there is a bigger issue at stake here. Firstly, Raghav Chadha, I know you're joining us, and we're going to talk about Punjab and the national impact with you, but just from a bigger perspective here, that don't you think the election commission should have spoken on this issue by now? This is a fairly serious allegation being leveled by the opposition's chief ministerial candidate, the main opposition party in UP. We still haven't heard from the EC. We've heard from the DM, and obviously he's going to deny it, right? So where's the election commission? Well, Nidhi, the Aam Aadmi Party has for a very long time been saying that EVMs can be gerrymandered with. EVMs can be tampered with. At the end of the day, it's a machine. And there have been several incidents in the past, whether it's of replacement of machines, whether it's of malfunctioning of machines, whether it's of programming of machines, that have come to fore. In fact, in several cases, prior to the election commencing, there is a 45-minute window in which each machine is tested in front of the returning officer, in front of the polling agents, etc. And even in that testing procedure on the voting day, prior to the commencement of the voting, various issues with the EVMs and the programming of the EVMs have been noticed across the country. So therefore, it has always been an area of concern, and I personally feel that Caesar's wife should be above suspicion. And therefore, if there is a doubt in the process of or the functioning of the electronic voting machines, it is time, like several countries in the West have moved, to go back to the paper ballot procedure. In fact, countries like Germany and several European countries, several states in the United States that are well equipped with the latest technology have abandoned EVMs and moved to paper ballot in this century, in this day and age.
Well, let me just get Mr. Sunil Bharala, senior leader of the UP BJP, who's joining us. सुनील जी, अभी हमने डीएम का बयान सुना एंड ही सेड कि भाई ये ईवीएम्स जो हैं ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे. सर, ये कौन सी ट्रेनिंग होती है इलेक्शन के 36 घंटे पहले जो करनी होती है? कहाँ ट्रेनिंग होती है? ये अभी तक ऑफिशियल्स को ट्रेन नहीं किया गया होता? आवाज आ रही है मेरी निधि जी? हाँ जी, बिल्कुल. निधि जी, नंबर एक बात यह है, मैंने अभी निर्वाचन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बयान भी सुना है अपने, और उधर विपक्ष पार्टी के जो नेता है उनका भी बयान सुना है. आप ये बताइए कि जहां मशीनें इस समय रखी हुई हैं, ईवीएम रखी हुई हैं और पैक है, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी, सब लोग वहाँ हैं ना इस समय? चारों तरफा सब लोग रुके हुए हैं और सबकी नजरें हैं. वहाँ से कोई मशीन या आपका जो कहने का भाव है, जो आप लोगों ने इस पर बात की है, या विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि मशीनों को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, वो निर्वाचन अधिकारी ने जो अपना एक पक्ष रखा है, उस पक्ष को ध्यान में रखते हुए उनकी पूरा स्पष्टीकरण हो जाएगा. और उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को या फिर इलेक्शन कमीशन भारत को या राज्य को अपनी कंप्लेंट भी की है, उस पर भी इंक्वायरी हो जाएगी. कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कल से जिस प्रकार से पोल आए हैं और रुझान आए हैं, अभी खुले नहीं है मत, रुझान आए हैं केवल, और एक चैनल ने नहीं, देश के सारे मीडिया चैनलों ने भी दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान दिखाए हैं और अभूतपूर्व दिखाए हैं. वो अभूतपूर्व नहीं, हमारा काम है, हमने काम किया है 5 साल तक. तो वे सारे रुझान आने के बाद में मैंने कल अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि ये जो रुझान है और जो सच्चाई दिखाई है चैनलों ने, इससे अभी जो है विपक्षी ईवीएम खराब है, ईवीएम में घपलेबाजी है, आदि आदि बात शुरू करने वाले हैं. हमने कल ही तो किया आप था कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल की वजह से हुआ सामने है? हो रही है, कल से शुरू हो रही है. अच्छा, आप कह रहे हैं एग्जिट पोल की वजह से हुआ है? बौखलाहट है समाजवादी मेरा तो सवाल सिर्फ ये था कि ये कौन सी ट्रेनिंग होती है? शायद मुझे मालूम नहीं है कि ये कौन सी ट्रेनिंग होती है जो 36 घंटे पहले होती है. लेकिन ये जो विषय है ट्रेनिंग का, हाँ जी, 36 घंटे का या 48 घंटे का ईवीएम इनके पास एक्स्ट्रा है, क्या है, वो सारा विषय जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिल्कुल उसका जवाब देंगे. अगर हमसे बात करेंगे तो हम बात करेंगे. पवन खेरा से वो बताएंगे. पवन खेरा, आई कम बैक टू दिस पॉइंट. आई डोंट नो, you know, I haven't bought into this theory of EVM tampering, Pavan Khera, but just a question that shouldn't the election commission by now have spoken up on this and clarified, you know, put the speculation to rest. कर रहे हुए हैं. No, I agree. It appears from what Mr. Sunil Bharala says that now the entire machinery is trying to justify what the exit poll said. पूरी मेहनत की जा रही है कि एग्जिट पोल को किसी तरीके से सही करवाया जाए पोलिंग रिजल्ट के दिन. मुझे तो अब यह लगता है सुनील जी की बातें सुनकर, I have participated in several counting. लगता है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूँ. सुनील जी 2 मिनट दे दीजिए. आपके पास आ जाएंगे. पवन जी को सुनिए. जी पवन. I have participated in several counting. Never seen this kind of a training just 36 hours before the counting day. It just doesn't happen. I'm sorry, even if the election commission comes and tells us कि नहीं हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता, कोई ट्रेनिंग नहीं होती 36 घंटे पहले. सुनील जी, आपने भी चुनाव लड़े हैं, आप भी समझते हैं इस बात को. आपकी मजबूरी है कि आप चुप बैठे हैं, वो अलग बात है. So even if one voter has a doubt on the electoral process, it is incumbent on not just the government, not just the election commission, not just the opposition party, not just the media, each and every one of us to allay those fears. Because after all, at stake is our democracy. कौन जीतता है कौन हारता है वो बहुत ही बाद की बात है. लोकतंत्र को नहीं हारने देना चाहिए. सुनील जी, ये आप भी समझ लीजिए, आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है. और सबके लिए हमेशा सूरज उगा नहीं रहता, अस्त भी होता है.
वैसे भी एक हेल्थ वार्निंग है, आस्क राघव चड्ढा की एग्जिट पोल्स कैसे गलत हो सकते हैं. आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ हेल्थ वार्निंग. मे बी द बीजेपी विल विन यूपी, बट लेट्स सी पिछली बार पंजाब में क्या हुआ और यू नो व्हाट द रिजल्ट वाज. स्मिता गुप्ता इज विद अस. पंजाब में क्या होने वाला है? Yeah, so we don't know. Let's wait for results. Smita Gupta is with us. She's a veteran journalist. Just Smita, your sort of take on this. It's really, worrying to see these kind of allegations getting leveled on the eve of elections. Is this just happening because the exit polls have made DSP nervous, or is there something to this? Well, I'm not going to make allegations, but certainly the fact that EVMs are walking 36 hours before the counting, the Election Commission should have come forward. The Election Commission of India should have come forward and explained what the reason was. Because till then, all of us will be speculating, and all of us will be, depending on which side of the fence we are, we will make allegations or we will justify it. And I would like to add something to this. There was a report on one of the TV channels, along with video clips, of a village in eastern UP, I think just before the 7th round of polling, where villagers came forward and said that that some BJP workers came at night to their villages and inked their fingers and gave them 500 rupees and said there's no need for you to go and cast your votes. And they had put in a complaint with the district magistrate. That's how the story came out. They came to the district headquarters and made a public complaint. So when this EVM story breaks after such an event, for which there has been no official explanation, the BJP hasn't come forward and explained whether these are just mere allegations or whether it's the truth. So I think it is important, for the sake of democracy and for the sake of fair play, that we have some clarity on all these issues. Raghav Chadha, one of the sort of criticisms, though, that the opposition often faces on this EVM issue is that it only comes up, when the opposition isn't doing well or it's losing certain states, and it's not a consistent issue that is raised with the Election Commission when you all win states and win, and the BJP loses them. So if there is a problem with EVMs and you feel that, doesn't the opposition need to consistently stay with that message? Nidhi, I think this is perhaps the only topic that binds all non-BJP parties, not non-NDA, non-BJP parties together. In fact, I remember I participated in a meeting called by the Chief Election Commissioner of India a few years ago, in which representatives of all state recognized and national recognized parties participated, and including allies of the BJP like JDU, like Apna Dal, etc., like Shiv Sena back then, said that we feel that EVM integrity can be compromised and perhaps has been compromised in the past, and therefore let's return to a safer mode of capturing the mood, the vote, the choice of the voter. That's point number one. Point number two, in fact, petitions were moved collectively by several, parliamentarians cutting across party lines before the Supreme Court, seeking, a direction that we should return back to the paper ballot. And the Supreme Court, if my memory serves me right, directed the Election Commission to take an appropriate view on that. That's point number one. Point number two, my suggestion to my colleague from the Samajwadi Party would be, like we have in Punjab, deputed our party workers and volunteers outside every strong room, and we have volunteers that have access to the CCTV footage of each strong room, that are manning those strong rooms 24/7 and watching those EVMs on CCTV for the last few weeks. You could also adopt this similar strategy to ensure at least one aspect of integrity, that post the elections these machines are not gerrymandered with. That's point number one. Point number two, when the BJP talks about the integrity of the machine, etc., let me remind my friend from the BJP that the first person in India to cast an aspersion or a doubt on the functioning of the EVMs was no less than Sri Lal Krishna Advani. That's right. Followed by Subramaniam Swamy, followed by GVL Narasimha Rao, who's a Rajya Sabha MP now, who even wrote a book, whose only claim to fame in life is that he wrote a book on how EVMs can be malfunctioned, can be gerrymandered with, and have often malfunctioned in the past.
So it's a bit rich coming from the BJP on this. But I let me only, get Mr. rest my IP case Singh by to saying let me that get if Mr. there IP is Singh. even an, Yeah, sorry, I'm just sorry, finishing, Raghav. Nidhi, if there's No, IP Singh ji, you know what the BJP is saying कि आप लोग आज परेशान हैं कि कल एग्जिट पोल ऐसे आए हैं, इसलिए आज आप लोग ईवीएम टैंपरिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि कल नतीजा आपके खिलाफ आ जाएगा। वैसे तो आप बोलते नहीं, आज बोल रहे हैं। निधि राघव के सुझाव आए। पंजाब में 117 सीटें हैं, दिल्ली में 70 हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 403 सीटें हैं, 75 जिले हैं। हम सब ने पूरी कोशिश की है कि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करी जाए। उसके बावजूद भी डीएम जिस तरह के चुनाव आयुक्त हैं वो सबके सब उत्तर प्रदेश के, उनकी तैनाती विशेष तौर से की गई है। चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली से रिटायरमेंट होने के बाद भेजा गया है। और रही मीडिया संस्थानों की, इंस्टीट्यूशन की बात, तो किसकी हैसियत है, किसकी हैसियत है निधि जी कि कोई मीडिया संस्थान एग्जिट पोल बीजेपी के खिलाफ दिखा दे? शाम को रात में संस्थान पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बैठा होगा, सुबह ताले लटक रहे होंगे संस्थान में। और इससे पहले 7-8 राज्यों के जो एग्जिट पोल हैं, मैं बीजेपी के मित्र को बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली और बिहार, उसके बाद बंगाल, यहां क्या परिणाम आया। और यशवंत देशमुख का स्टिंग ऑपरेशन तो सबको, मैं समझता हूं, राघव जी और श्री पवन। Well, let me just give quick last comments. Unfortunately, I couldn't talk about the national impact because we talked about this. इनकी कहां से आई? बिल्कुल, Pawan Khera, you know, is there a need then for political parties across the board to push for actually bigger reforms here with the EC? Not just about EVMs, if that's a concern you have, but even the way this election is conducted now in so many multiple phases. Is that also something that is undermining the process? Is that something you all can come together and say that, look, we can't do this in 7-8 phases anymore, reduce it? No, Nidhi, some of our election laws and rules are pre-private channel days, the Doordarshan era. Now the kind of airtime the ruling party gets on private channels, there is nothing to monitor that airtime. So of course, a lot of reform needs to sort of catch up with the changing times. And for that, not just the non-BJP parties, including the BJP, because BJP will not always stay in the ruling party. They will definitely be the opposition party today or tomorrow. So we all need to come together and press for these reforms. But एक फेज का खत्म हो जाता है चुनाव, प्रधानमंत्री कहीं गुफा में जाकर बैठ जाते हैं दूसरे चरण का, और प्रचार पूरे देश में चल रहा है उनका. Oh, that's something which is unpardonable. How can he get that kind of an airtime? Just because he's the Prime Minister, or just because Arvind Kejriwal is the Chief Minister. Arvind Kejriwal being the Chief Minister of Delhi, पंजाब के अखबारों में सरकारी विज्ञापन दे रहे हैं साहब, क्यों दे रहे हैं? अरे बताइए, आपने दूसरा फ्रंट बोल दिया। नहीं, जरूरी है ये सब बातें। देखिए राघव, दिस इज नॉट अ पर्सनल कमेंट, दिस इज अ कमेंट फॉर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। प्लीज डोंट हाईजैक डेमोक्रेसी। ये आज हमें बाइट कर रहा है, कल आपको भी बाइट करेगा, और बहुत ज्यादा तेजी से बाइट करेगा। नहीं, सही कह रहे हैं आप कि इफ इट हैपेंस इट विल अफेक्ट एवरीबॉडी। सुनील जी, क्या आप मानते हैं कि क्या भाजपा मानती है दैट देयर इज अ नीड कि इलेक्शन, हमें थोड़े छोटे इलेक्शन करवाने चाहिए? ये जो ईवीएम को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, ईसी को इसको क्लैरिफाई करना चाहिए एंड पुट द मैटर एट रेस्ट। क्या आप मानते हैं कि 7 फेज जरूरी थे उत्तर प्रदेश में? 3 फेज में नहीं हो सकता था? देखिए निधि जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं। बंगाल में चुनाव हुए तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ये नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, यहाँ कोई गड़बड़ी की आशंका है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, किसी ने नहीं कहा था। राजस्थान में हुआ था, किसी ने नहीं कहा था। आप देख रहे हैं, गौर करिए आप राज्यों पर। अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जहां भी रुझान आते हैं और जहां मतलब काम है, पार्टी ने काम किया है, जनता का वोट हमें मिलेगा, जनता का वोट हमें मिला है, परसों को खुलेगा। और मैं फिर आपसे भी कहना चाहता हूं इस बात को कि कोई समस्या वहां नहीं आती उस राज्य में जहां हमारे रुझान, जहां भारतीय जनता पार्टी पराजित हो जाती है, तो वहां किसी को कोई प्रकार की बात नहीं उठती, ना ईवीएम की बात उठती है, ना कोई बैलेट की बात उठती है, ना किसी प्रकार के निर्वाचन अधिकारी पर कोई बात उठती है
केवल जहां भारतीय जनता पार्टी बढ़त और भारतीय जनता पार्टी का काम और जनता पसंद करती है, जनता वहां मोहम्मद देती है, वहां आज चीफ सेक्रेटरी पे ईमानदार आदमी पर सवालिया निशान लगा दिया। तो वो वहां पर नहीं, मेरी बात सुनिए आप पहले। मैं पूछना चाहता हूं, मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि ये कम से कम इस बात को ध्यान दें, चीफ सेक्रेटरी जो ईमानदार चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार में काम करने के बाद में उस पर आज तक कोई उंगली ना उठाई, तो उसकी नियुक्ति पर उस पर निशान लगा दिया गया। उस पर अपने ये अधिकार है सरकार का, ये सरकार किससे काम लेना चाहती है, किस अफसर को रखना चाहती है, सारा चीजें। I'm completely out of time. Raghav, please, I couldn't even come to you to talk about Punjab and sort of the national impact, and I realized we have the whole week to talk about the national impact. So we absolutely have to take a break. We'll see you all on counting day. Thanks so much for joining us.